Raoult's law. Okay. The very first thing, statement. टॉपिक कौन सा है अपना? सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव. Already we have completed all the parts of solution, and in colligative we have done vapor pressure concept. Now in that only, in the concept of vapor pressure only, we have Raoult's law. The law states that, you can write with me. The law states that the partial vapor pressure, the law states that the partial vapor pressure of any volatile component everyone knows what is the meaning of volatile. Something which escapes easily. Anything having low boiling point. जिसका boiling point कम है वो volatile है. वो जो जल्दी उड़ जाता है. Hey, organic chemistry is very volatile. So the law states that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is the product of vapor pressure of that pure component and the mole fraction of that component in the solution. क्या लॉ है? पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का, उसके वेपर प्रेशर जब वो एकदम प्योर फॉर्म है उसका वेपर प्रेशर और उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर. द लॉ स्टेट्स दैट partial vapor pressure of any volatile component of a solution is the product of vapor pressure of that pure component and the mole fraction of that component in the solution. जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक बीकर है और इसमें दो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन है. इस बीकर में दो वॉलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन है. दो तो मिनिमम लेना जरूरी है, तभी तो पार्शियल हुआ. अगर इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो फिर पार्शियल क्या हुआ? जो हुआ उसका पूरे का हुआ.
Correct. So suppose this vessel contains two components A and B. Yes. A का P0 है वेपर प्रेशर ऑफ, तुमको पता है नॉट किस लिए यूज होता है? प्योर सॉल्वेंट। और एक्स ए इसका मोल फ्रैक्शन है। किसमें? सॉल्यूशन में। ये जो इस बीकर में है वो क्या है? सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन में से ये निकाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन में ये प्योर है ही नहीं। यानी एक और वेसल अगर लिया जिसमें सिर्फ ए है, उसका जब हमने वेपर प्रेशर निकाला तो P0 ऑफ ए बोलेंगे, यानी कि ये। समझा? Yes, वैसे और एक बीकर लिया जिसमें सिर्फ मैंने कलेक्ट किया, आई कलेक्ट ओनली बी। When I find its vapor pressure, I call it P0B, which I am writing here. P0, this is vapor pressure of pure solvent. Which pure solvent? B. और इसका जो मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में जो है, इधर नहीं हो सकता, ये तो पूरा A है, ये पूरा B है, इसकी बात नहीं हो रही। समझ रहे हो ना? इसके हाँ, अंदर X है और इसके अंदर XB है, which is mole fraction. मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। अब मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा इसके अंदर? प्रोडक्ट ऑफ vapor pressure of pure B into mole fraction of B in this solution. Is this clear? yes, ma'am. Yes. So the law states that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is the product of vapor pressure of that pure component and mole fraction of the component in the given solution. मतलब जब भी आपको किसी भी सब्सटेंस का उसके मिक्सचर में से वेपर प्रेशर निकालना है, जिसको कि पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं, तो उसका मेथड है आप उस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन का और उस सब्सटेंस के प्योर वेपर प्रेशर का, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर का प्रोडक्ट ले लो। मतलब फटाक से 30 सेकेंड्स में रिवाइज करते हैं इसको। आई कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, मेरे पास मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट हैं ए बी सी। मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में मेरे पास सॉल्यूशन है, and this solution contains mixture of 3 components A, B and C. And in these 3 are, we know, present in this solution, and we also know that they are volatile in nature, because we said partial vapor pressure of a volatile component. So what I'll do, first I will take pure A, I mean only A means pure A. Same way I take only B means pure B, nothing is there. And I take only C, meaning I take pure C, nothing else is there. What do we call them? We call them solvents, because they are pure. Only when I add solute to it, they will become solution. Why is this a solution? Because I have mixed ABC. Now what I do is I find their vapor pressure of pure A.
I call it P naught A. Vapor pressure of pure B, I call it P naught for B. Vapor pressure of pure C, I call it P naught of pure C. Now I go in the solution, I find XA, which is Na upon Na plus Nb plus Nc. Similarly, I find, are you clear? XB, I find XC. Shall I write formula to find XB and XC? How I wrote for XA? Any need? No, ma'am. No, ma'am. Hello? No. Now I want to find, according to Raoult's law, partial vapor pressure of ABC. So I know partial vapor pressure is indicated by PA. So what is PA? Product of XA and vapor pressure of pure A. What is partial pressure of B? Product of XB and vapor pressure of pure B. What is partial pressure of C? Product of vapor pressure of pure C into mole fraction of C in the solution. I hope this much revision is sufficient. Yes or no? Yes. Everybody? Yes, ma'am. Okay. Now, suppose we are asked for a proper explanation in the exam. ये सब जो हमने थोड़ी देर पहले किया, ये सब समझने के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन एग्जामिनर को ऐसा बीकर बना के, डब्बा बना के खाली लिख के आ जाएंगे तो एग्जामिनर थोड़ी हमें मौका देगा बोलने का. मैं तो बीकर के साथ बोल रही हूँ, मुझे जो बोलना है, एग्जामिनर थोड़ी बोलने देगा. ओरल एग्जाम थोड़ी होगा, तो फिर एग्जाम में हम रिटन एग्जाम में हम क्या लिखेंगे वो हमें मालूम होना चाहिए, तो वो हम जल्दी जल्दी सीख लेते हैं. तो मैं बोल रही हूँ, कंसीडर. मैं बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, तुम भी तो लिखो ना. Consider a solution containing two ठीक है, इतना सब हमने एज्यूम कर लिया. We are saying we have a beaker. In beaker we have taken two volatile components, A and B, and उनका mole fraction है x1 and x2, and उनके vapor pressure है P01 and P02 respectively. Let this be point A, point B. Hence, according to hence according to Raoult's law, I hope you are writing with me. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. according to Raoult's law, the partial vapor pressure
P1 and P2 for the components A and B are given as what we will make P1 partial pressure of 1 is equal to product of mole fraction of A, that is 1 into the vapor pressure of pure component 1. Similarly, partial pressure of component 2, partial vapor pressure of component 2 is the product of mole fraction of component 2 in the solution and vapor pressure of pure component 2. Yes? Yes. Now, the total vapor pressure, the total vapor pressure of the solution, the total vapor pressure of the solution, थक मत जाना, लिखते जाना, solution PT is the sum of partial vapor pressure of the two components our solution has only two components, meaning we are talking about Binary solution. So how we will write? Therefore, PT is equal to P01 X1 plus P02 X2. Correct? Yes. Yes. Now we know that for a binary solution, X1 plus X2 is equal to 1. Do you agree? Correct, no? X Yes. is mole fraction. Yes, ma'am. Fraction 1 में होता है. So X1 plus X2 will be 1. Or we can say X2 is equal to 1 minus X1. Okay? Yes. Therefore, PT is equal to, I'm just substituting that, no? P0 X1 plus P0 2 1 minus X1. I've just substituted. Hey, Bacha Party, did you understand what I did? Yes, ma'am. Hey. Yes, ma'am. Okay, now I'll just open the bracket. PT is equal to P0 1 X1 plus P0 2 minus P0 2 X1.
Therefore, PT is equal to P naught 2 plus, I'm taking x1 common and I'm writing P naught 1 minus P naught 2. Is this clear? Yes, ma'am. Now, these are Yes, the ma'am. two equations which are used to solve numericals. You know, ये खाली मैंने ऊपर वाले इक्वेशन को ही थोड़ा रिफाइंड वे में लिखा है और कुछ नहीं. Are you getting me? अगर मेरे पास x2 निकालने का कहीं कोई भी क्लू नहीं है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ. और अगर मेरे पास पूरा डेटा है, then to find the total vapor pressure, I can make use of this formula. Correct? So these are the two formulas which can be used to find the total vapor pressure. I hope this is clear to everybody. Yes, ma'am. Correct? Now, these were the expressions for the volatile component. For the Volatile component. Volatile component. what if we have Non-volatile. non-volatile component? तब क्या करेंगे? तब सीधी सी बात है, अगर सल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर निकालेंगे ही क्यों? अरे भाई, नॉन वॉलेटाइल का वेपर प्रेशर क्या होगा? हेलो 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 हेलो. Yes. 0. मतलब इन दोनों में से P1 और P2 में से इफ कोई भी नॉन वॉलेटाइल होता तो उसका वेपर प्रेशर 0 होता है और उस 0 का प्रोडक्ट मोल फ्रैक्शन के साथ करते तो क्या आता? 0. 0 ही आता. तो अब नॉन वॉलेटाइल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. आर यू रेडी? Yes, ma'am. हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो. एवरीबडी इज नॉट आंसरिंग. आई कांट हियर एवरीवन्स वॉइस. मैं पहचानती हूँ हर एक की आवाज. हेलो. Yes, ma'am. Yes. Okay, now many people answered. Fine. Atharva, I can't see you. I can see only your forehead. What I have to do with it? Okay. Now, for volatile component, please write with me. No. क्या बोल दिया मैंने? For the non-volatile component, not volatile. Non-volatile. Please write with me. The law states that. कई बच्चे सोचते हैं टीचर एक एक टॉपिक इतना इतना बड़ा है, क्या करेंगे, ये केमिस्ट्री बहुत टफ है. बट एक्चुअली ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है. The law states that vapor pressure of a solution of non-volatile
solute is directly proportional to the mole fraction of, तो देखो solute तो non volatile, उसका तो vapor pressure 0 है, so obviously it will be mole fraction of solvent x1 at of given temperature. यानी देखो मैथमेटिकली लिखें तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन यानी कि वही पीटी होगा टोटल, in which solute is non-volatile. So total vapor pressure of solution will depend only on mole fraction of solvent. This is the meaning. Or just see what am I doing. Vapor pressure of a solution of non-volatile solute vapor pressure of a solution of non-volatile solute is the product of vapor pressure of pure solvent P01 and the mole fraction of the solvent X1. Means same PT will be, अब देखो यहां हमने लिखा प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, I am removing this proportionality sign. See, यही बनेगा, घूम फिर के यही इक्वेशन बनेगा, PT is equal to, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी निकाला तो मैंने क्या डाल दिया उधर, P01 X1. P01 is constant of proportionality. It is a constant, no? It will be constant for that solvent. Every solvent will have a fixed vapor pressure in its pure form. Like every solvent will have fixed boiling point in its pure form. Every substance will have a fixed freezing point in its pure form. Every radiation will have a fixed wavelength in its pure form. So ये wavelength, vapor pressure, freezing point, boiling point are characteristic of a substance. So P01 will be constant for solvent
1. That means the same equation can now be given like this. अभी अगर आप बच्चों सो नहीं, ओ टीचर बड़ा ही मुश्किल काम देती है। Anyway, अगर आप लेक्चर में सो नहीं, of course I understand it is difficult. ऐसा नहीं बोल रही मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही, मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, लेकिन तुमने दाल चावल भी तो इतने खा लिए। See, we look here. अब अगर हम कह रहे हैं सपोज हम मान रहे हैं ये x2 ये नॉन वॉलेटाइल, तो इधर ही हो गया, ये हो जाएगा P02 इंटू x2, यानी ये x2 0 है, सो P02 इंटू 0 यानी 0 आएगा। मतलब ये वाला टर्म उड़ जाएगा डेरिवेशन में से या नहीं? हेलो, Yes, ma'am. this will be 0, so it will come P01 x1 only. Yes. So that is what is written. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So everybody, I hope it's clear to you. Yes, समझा ना? Yes, ma'am. मैंने इतना धीरे धीरे प्यार से समझाया है, समझ आ ही गया होगा यार। और नो? समझा ma'am. समझा? yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. suppose we want to give its तो भी डिफिकल्ट नहीं। सी क्या कह सकते हैं हम? ये कह सकते हैं कि कंसिडर अ सॉल्यूशन containing two components A and B No, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. With mole fractions XA and XB. Okay? या चलो 1 and 2 लेते हैं। अभी हमने 1 and 2 लिया था, 1 and 2 ही लेते। नहीं तो तुम गड़बड़ कर दोगे। नहीं वैसे गड़बड़ नहीं करोगे, स्मार्ट हो। एंड vapor pressures P01 and P02 respectively. Therefore, equation 1 becomes, ये कौन सी इक्वेशन थी? हमने तो लेबल ही नहीं किया। चलो चलो पीछे चलते हैं। ये रहा इक्वेशन 1। ठीक है? ये कौन सी आवाज है? ऐसे आवाज आई कुछ तो। ओके, इक्वेशन 1 PT इलू कौन 0 होगा भैया? देख तो लू। ये 0 है, देखो ये 0 है। करेक्ट? P02 नॉन वॉलेटाइल 0 प्लस क्या लिखा था मैंने? अब बोलो ना उस इक्वेशन में क्या था यार? तुम भी ना बार वहां जाऊं क्या? X1
x1 into p01 minus 0, yes or no? Yes. तो आया x1 p01 आ गया. So this is what the meaning of Raoult's law is. अब देखो टफ लगता है, कुछ टफ है क्या? प्रैक्टिस करेंगे सब आएगा, पढ़ाई करेंगे सब होगा. अरे वही तो नहीं होती ना टीचर पढ़ाई. एक तो इतना बड़ा लॉकडाउन है टीचर, क्या क्या करे मासूम बच्चा. फॉर बाइनरी सॉल्यूशंस यानी सॉल्यूशंस हैविंग टू कंपोनेंट्स. एक दिन मैं बैठ के सोच रही थी, हे प्रभु, हर साल मैं बच्चों की सूरत तो देख पाती थी सामने से, ये तो पूरा ही साल फुटबा देखने में ही निकल गया. फुटबा, फुटबा यानी फोटो. ओके, मिल ही नहीं पाए किसी को. सोचा अब मिलेंगे, अब मिलेंगे. पूरा वो जो आमने सामने हमसे सीखने का एक आनंद है ना, वो किसी बच्चे को मिल ही नहीं पाया. Therefore, कुछ तो बड़े खुश हैं. अरे जब ऑनलाइन होमवर्क नहीं करने पर ऐसी खटिया खड़ी कर देती हैं, तो हे भगवान मुलाकात पे क्या होता. अच्छा हुआ ऑनलाइन ही हो गया ये पूरा साल. So x1 is equal to 1 minus x2. Since x2 is mole fraction of non-volatile solute, what do you say? x2 is less than 0 or equal to 0, not equal to 0. x2 के लिए क्या लिखूं? Equal to 0, not equal to 0. x2 Equal to अरे नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट तुमने सॉल्यूशन में डाला तो है ना, उसका वेपर प्रेशर 0 है, वो 0 थोड़ी है. हे भगवान, मानो एक बच्चा 35 में से 0 ले आया एग्जाम में, ऐसे एक आध बच्चे मिल जाएंगे तुम्हें, तो मैं क्या बोलूंगी, ये बच्चा 0 है. अरे भाई मैं बोलूंगी ये बच्चा 0 मार्क्स लाया है. Yes or no? Yes, So x2 is not 0, my dear. So x1 is 1 or less than 1? देखो ना, x1 plus x2 is 1. less than 1. Less than 1. So P01 x1 is less than P01 or greater than P01 or equal to P01. ये देखो, तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझा. ये देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solvent 1 is P01. अगर x1 पूरा 1 है तो x2 0 है. x1 plus x2 1 होना चाहिए. yes or no? Yes. अब मैं बोल रही हूँ x2 0 नहीं है, हमने x2 डाला है, उसका वेपर प्रेशर 0 है, वो 0 नहीं है. मतलब x1 1 नहीं है, x1 1 से कम हो गया. कितना कम? जितना x2 है. भाई x2 हमने कुछ लिया ना, x2 जब 0 है तो x1 1 है.
जब x1 1 है तब P0 1 पूरा है, मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटी, कोई x2 नहीं है। Yes. करेक्ट? Yes. करेक्ट। तो प्योर का पार्शियल प्रेशर क्या हुआ? P0 1 x1, लेकिन x1 कितना है? x1 1 है, x1 1 है तो कितना आया? P0 1। यानी प्योर कंपोनेंट का प्रेशर ही उसका पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि x2 नहीं है। नहीं समझा? समझा मैम। समझा? अब x2 0 नहीं है, x1 लेस देन 1 है। चलो एज्यूम कर लेते हैं लेस देन 1, यानी चलो 0.2 ले लेते हैं। 0.2 ले लूं, चलेगा? Yes. अब P1 क्या आएगा? P0 1 x1, तो P1 क्या आएगा? P0 1 इंटू 0.2। करेक्ट? तो अगर मान लेते हैं P0 1 3 है, तो अब जो नया ये P1 है जब x2 0 है और x1 ही 1 है। अब तुम्हारा P0 1 है 3 इंटू 0.2, क्योंकि अब तुम्हारा x1 सिर्फ 0.2 है, तो ये 0.6 आएगा। तो क्या सेम आया? कम आया ना? Yes. Yes, ma'am. मतलब P0 1 इज ओनली 0.2 टाइम्स ऑफ P0 1। उसका 0.2 पार्ट ही है, वो उसका 0.2 टाइम्स पार्ट ही है। आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. समझा नहीं समझा? सबको सोच लो, नहीं तो एक बार और बता दूं। समझा। Anyone wants me to explain once more? जल्दी बोलो, अभी तक तो बोल देती मैं, सिखा के खत्म हो जाए। If you want, I can explain once more. Tell me quickly. Quick. No? No ma'am. Everybody? Rebecca, you want me to explain once more? No, ma'am, understood. Okay, fine. Very nice. So, P0 1 x1 will be less than P0 1, correct? Suppose x1 1 है, मतलब x2 नहीं है। क्यों? x1 plus x2 is always 1. Now what is your P1? P1 is P0 1 x1. Let P0 1 be 1. So what is P1? 1 into 1. That is, it is also 1. Let us change the data. Let x1 be 0.8 and let x2 be 0.2. Why? Because x1 plus x2 has to be 1. So ये 1 हो जाएगा. Now P1 is equal to P0 1. Okay, let P0 1 be 1. ये भी assume कर लेते हैं. Now P0 1 x1, that is 1 into 0.8. तो 0.8 आया. तो 1 से कम आया ना? इधर तो 1 आया था. 1 से कम आया ना? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. x1 is less than P0 1, or we can say PT is less than P0 1. मैंने ये क्यों डाला PT is less than P0 1? PT क्या Because PT क्या था? P0 1 x1. P0 1 into x2. Okay, hence I can say vapor pressure of pure is not pure solution of a solution. Solution कभी प्योर नहीं होता, उसमें सल्यूट का इम्प्योरिटी होता ही है. सॉल्वेंट प्योर होता है. Hence vapor pressure of a solution is always, देखो क्या लिख रही हूँ,
the pure solvent. That is why we call it, can you tell me what do we call it? That is why we call this process. Hey, come on. Lowering in vapor pressure of the solution. Is it clear? देखो ना, solution का vapor pressure हमेशा कम आएगा than the pure solvent. Clear or no? Yes. Yes, ma'am. Everybody understood why we call it lowering in vapor pressure? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Each and every one of you. Yes, ma'am. Now see, कितने points हो गए हमारे? Okay, fine. Now we can say the lowering of vapor pressure is the difference in the vapor pressure. This is the definition I told you to write. I thought you will answer. Of pure solvent and its solution. Lowering is denoted by delta P. Delta P is equal to P01 minus P, where P01 is vapor pressure of pure solvent and P is vapor pressure of, ये P को हम लोग PT भी लिखते हैं और वो PT को हम लोग PS भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत हो. So we can write delta P is equal to, लिखते रहो. तुम्हें याद है PT का फॉर्मूला क्या आया था? P01x1. So we can write delta P is equal to P01 1 minus x1. ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. Another formula, that is delta P is P01. Can you tell me one term for 1 minus x1? X2. X2. Therefore, delta P is P01 तो constant है, x2. Can you tell me this in the form of the statement? Can you make a statement for this? Come on. No? Ma'am, lowering of vapor pressure is directly proportional to concentration of solute. Mole fraction of solute. Mole fraction. Concentration in mole fraction. Mole fraction is a way to express concentration. So see, lowering in vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the non-volatile solute. Is that clear, Bacha Party? Yes. And this I can write it as, hence, lowering in vapor pressure of solution is the product of
vapor pressure of pure solvent and mole fraction of non-volatile solute. Clear? Yes, ma'am. From here I can write delta P upon P01. देखो ये कहां से आया, वापस लिख देती हूँ पहले वाला इक्वेशन. पहले वाला इक्वेशन ये था, अभी अभी जो हमने वर्ड्स में लिखा वो ये था. That is, lowering in vapor pressure of a solution is equal to product of mole fraction of pure solvent and the no. Gadbad. Once again I am saying lowering in vapor pressure of a solution is product of mole fraction of non-volatile solute and vapor pressure of pure solvent. That means ratio of lowering in vapor pressure upon vapor pressure of pure solvent is equal to x2. Delta P is also written as P0 minus PT. I can write it 1 also. I may not write 1. It is understood. I can write like this also. I can write it like this also. All these over here are vapor pressure of pure solvent. And children, whatever I have written on the other side, they all are the symbols of vapor pressure of solution. So don't be confused. So I can write delta P as P01 minus P pan P01 ilu x2. This is called relative lowering in vapor pressure. क्यों? क्योंकि आप इसको ओरिजिनल से रिलेट कर रहे हो. जब भी किसी डेटा को उसके ओरिजिन से रिलेट किया जाए तो उसे रिलेटिव डेटा बोलते हैं. So this is relative lowering in Vapor pressure. now these are, by this we have covered all the angles of looking at the Raoult's law. Only we can extend the angle like this. We say P01 minus P upon P01. Can you tell me what is P01? Quickly, what is P01? Vapor pressure of the Vapor pure pressure of pure solvent. What is P? Vapor Vapor pressure of solution. What is X2? molar concentration of Fraction solvent. of non-volatile solute. Molar concentration कौन बोला? What is X2? mole fraction Mole of fraction of solvent. What is the formula? N2 upon N1 plus N. If I substitute it here, I get equal to N2 upon, this is another formula, correct? Yes. Remember, this is one of the way to write Raoult's law. ये जो मैंने black में लिखा है ये वाला, this is also one of the way to write the Raoult's law. This is also one of the way to write the Raoult's law. But what I have to remember, so I'm saying remember. Raoult's law is applicable to ideal, very dilute, ideal and very dilute solution. अब तो
तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, ये तुम मुझे बताओ, N2 क्या होता है? ये N2 क्या होता है? जल्दी 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 बोल, मुंह तो खोल, जल्दी बोल. Number of moles of Number of moles of solute. And what is N1? Number of number moles of moles of solvent. तो अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो क्या कम है? Solute. solute. सल्यूट. यानी N2 is less than N1. मतलब can I say N1 plus N2 is almost equal to N1 only? Yes or no? Yes. So this equation will also be or can also be written like this for very dilute. For Very dilute. very dilute क्या हलवा? Solutions. For very dilute. Children, that completes the RAOULTS law in all its permutations and combinations. I hope it's clear to you. Ma'am, Yeah. in first case, A and B both are solvent, and in second case, A is a solvent and B is a No, my dear. In case 1, it was not A or B which are solute. It is anything, but both are volatile. Even solute can be volatile, no? I can mix anything, ना? मैं एक solvent में कुछ भी mix कर सकती हूँ ना, वो volatile भी हो सकता है, वो non volatile भी हो सकता है. Yes, ma'am. Got it? Hello. Yeah. तो यहाँ पे भी कोई भी एक सॉल्वेंट है और दूसरा सल्यूट है. अगर ए सल्यूट है तो बी सॉल्वेंट है, अगर ए सॉल्वेंट है तो बी सल्यूट है. खाली यहाँ दोनों के दोनों वॉलेटाइल है. और यहाँ पर कोई एक नॉन वॉलेटाइल है. ऑब्वियसली वो सल्यूट ही होगा, क्योंकि सॉल्वेंट में तो मुझे डूबा करना है, सल्यूट को डुबाना है यानी डिसॉल्व करना है. ओके. Yes. So that completes RAOULTS law in all its permutations and combinations. Okay. Bye.